Inshallah. Okay, so this is your question number 1 of gravitation. ग्रेविटेशन की कुछ क्वेश्चंस की हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिए जाएं हर टॉपिक के, सो दैट यू विल बी कन्वीनियंट इन नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. यस, बाय द रेफरेंस. हाँ, जी बताइए. gravitational potential is the work done per unit mass to move a small mass from infinity to that point. So it is negative as work is done on the object. Yes, actually you have no need to write its definition here. Definition nahi likhni. Phi is negative because first thing you have told me, because work is done on the object, our energy is lost when the object comes closer. ठीक है. वालेकुम सलाम. अफान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो क्लास एंड हो गई सर में पहले थी, पहले से स्टार्ट हो गई अच्छा थी. मैं समझा क्लास. ठीक है, बिल्कुल सही हो गया. ये अच्छी बात हो गई. और ये बाय चांस आप वाला क्वेश्चन ही स्टार्ट किए है और वहीं से आपको इंशाल्लाह हेल्प अच्छा, चैप्टर 2 सही है. यस ठीक है. वो कुछ क्वेश्चंस इसके भी थे बच्चे के, तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं. ठीक है. सो अब फाई इज नेगेटिव बिकॉज वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट एज इट कम्स क्लोजर. ठीक है, एज इट कम्स क्लोजर. सेकेंडली, क्योंकि आपके पास 2 मार्क्स हैं, तो दूसरा आप ये लिखेंगे कि ऑल्सो द वर्क इज डन ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि इसकी डेरिवेशन में वर्क इज डन ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस. मैं समझाता हूँ आपको. attractive forces, that is when we derived potential, that was actually what it was, work done divided by mass, and this work done was F into D divided by M. And what was that force? This was basically minus G M yes, by R square divided by R square into D by M. So this is the reason जिसकी वजह से आप इसको लिखते हो कि that is the work done due to attractive forces. Sir, if you the can, work is done. Sir, you can directly just use FD. FD is the gravitational potential energy, so minus GMM by R. Yes, हाँ, वो भी उससे भी हो सकता है, लेकिन जब आपको ये बोलेगा कि by definition, so then you will be bound. ठीक है? Okay. Yeah. Now, this is a horrible question of gravitational potential actually. 2 stars A and B have their surfaces separated by a distance of 1.4 into 10 raised power 12 meter, as illustrated in figure 1.1. There actually this is not the distance from their centers, this is the distance from their surfaces. Point P lies on the line joining the center of those 2 stars. The distance x of the point from the surface of star A may be varied. इसका मतलब ये हुआ कि there is an object which can move along the line joining the surface, और ये object आपका जा रहा है from surface of A to surface of star B. The variation in distance x of the gravitational potential, again very important point, कि आपको ये ग्राफ दिया गया है किसका? That is the graph of gravitational potential, not gravitational potential. So that is the graph which is basically used for what? Anji? That graph is the variation within gravitational potential and distance. ठीक है ना? ये बात clear है? तो अब आप जब इसको देखो तो gravitational potential and distance का graph है ना? So let's talk about that graph. The gravitational potential is, this is phi actually. It is in 10 raised power 8 joules per kg, and there is the distance along this. आपको मैंने कहा था कि this graph is always in the 4th quadrant, ना? यही कहा था ना मैंने? Yes. So that is why आप देखो x axis आपका ऊपर है और वैल्यू आपकी माइनस में जा रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि if I just see the graph without going to the question, I can consider that here is potential at the surface of star A and here is the potential at the surface of star B. ये दो बातें तो मैं find out कर सकता हूँ ना. And at the surface of star A, potential is minus 10 into 10 raised power 8 joules per kg. यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है.
or here it is minus 14. So it is minus 14 into 10 raised power 8 joules per kg. ये बात क्लियर Yeah. हो गई? ये दो चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली. Now move for the question. What is being asked in the question? In the question, a rock of mass 180 kg, that is very important point. A mass of rock 180 kg moves along the line joining the centers of the two stars from star A to towards star B. Use the data from figure 1.2 to calculate the change in kinetic energy of the rock when it moves from point where x is 0.1 into 10 raised power 12 meter to a point where x is 1.2 into 10 raised power 12 meter. State whether the change is increased or a decrease. This is the major question, and this question will be actually solved with the help of all the given information along with the graph. हमने करना क्या है? हमारे पास एक rock है, and that rock is moving from surface of star A to surface of star B, and when it is at So 1.1 isn't it into 10 supposed to be raised power, the center? क्या चीज? This Uh, one? yeah, isn't it Potential? supposed to be the center? Yeah, from the Actually center. आपके पास ना यहाँ से आप देखो, this is your 1.0, that value, this is your 0, sorry, not 1.0, 0.1 into 10 raised power 12 meter, and this is your 1.2 into 10 raised power 12 meter. ठीक है ना? So what did he do, or what did he tell us? It is moving from surface of A to surface of B. अब आप इन दोनों के बीच में distance देखो. The surface distance is 1.4 into 10 raised power 12 है ना? So if you take this distance, that distance is starting from this. तो इसका मतलब ये हुआ कि this is surface of A, Yeah. right? And Yes. this is your surface of B, B. isn't it? Yes. तो क्वेश्चन इज यानी डेटा इज गिवन फ्रॉम इन बिटवीन. आपके पास ये सरफेस ऑफ ए या सरफेस ऑफ बी नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ पॉइंट वेयर इट इज at 0.1 into 10 raised power 12, and this is just a point. It is not yet reached to the surface of star B. ये एक पॉइंट तक हम लोगों ने फाइंड आउट करना. ये बात क्लियर हो गई? Yes. ओके अफान बेटा आपको भी क्लियर है? जी सर. ओके आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब आप देखो काइनेटिक एनर्जी का चेंज का कोई हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इफ वी से दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हैज अ रिलेशन, then we can go to the Yes, answer a change in that GP is equal to change in kinetic energy. No? yes, change in GPE is equals to change in KE. तो आपके पास यहाँ पे actually change in GPE is in the form of change in M in sorry, this change can be calculated in this way: mass of the object into change in potential is equals to change in kinetic energy, because we are not supposed to calculate further. So इसलिए kinetic energy को मैं और divide नहीं कर रहा हूँ, but I have 2 points. Mass of the rock is given to me, that is 180, and what is potential at 1.2, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, potential at B minus potential at A, ठीक है, that is the change in kinetic energy. So if I will plug in the values, it will be 180 kg is the mass. This was the value minus 14 point sorry minus 14 into 10 raised power 8, ठीक है ना, and minus formula का, ठीक है, this is minus of the formula, ये जो आपको वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख के दी है, and then what is the potential at surface of star A, sorry, at 0.1 into 10 raised power 12, that was minus का 10 into 10 raised power 8. ऐसे ही था ना? Okay. ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करिए जरा. 180 into
-4, so I'm just taking this minus outside. ठीक है, तो it would be minus into 180 into 4 into 10 raised power 8. So ये आपके पास बन रहा है तकरीबन 782. तो 7.2 into 10 raised power 10 or 11, just कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए. Yeah. सर मेरे कैलकुलेटर मेरे पास नहीं पड़ी. I would do it. ओके, अफान आपके पास है? एक समय में कर लेगा. जी सर यही है. ओके, मैं 7.2 ये 10 दिया 10 है 10 11 नहीं. 10 है. हाँ, बस ये वैल्यू थोड़ी सी, क्योंकि जस्ट आई यूज टेबल दैट 18 4s are 72 एंड जीरोस को मैंने खुद अपने दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट किया, बट आई बिलीव दैट आप लोग कैलकुलेटर से करोगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम. देन व्हाट इज दिस चेंज? बिकॉज यू आर गेटिंग नेगेटिव साइन हियर, इट मींस यू विल से दैट इट डिक्रीजेस. ठीक है ना? Yes. Negative sign shows that यानी change in kinetic energy is that the kinetic energy decreases actually. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो that kinetic energy decreases, no problem at all. ठीक है, is this all clear? Yes sir. Okay. उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे पार्ट 2 दे रहा है कि एट अ पॉइंट वेयर x इज 0.1 into 10 is about 12 meter, the speed of the rock is v. Determine the minimum speeds v such that the rock reaches to a point where x is 1.2 into 10 raised power 12. Wow, what a question. Go back to that point. वो कह रहा है कि at this point, what is the speed of the rock? The speed is v. ठीक है, at this point. Yeah. And we need to calculate this minimum speed which is required to move this, to shuffle this position or to shift it to this position. अब इस क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि there is a trick in this one, because as of, let me mark this point, ये वाला जो point है ना, let's say, because that was mentioned that it is point P, but suppose it is not just mentioned, तो आप ये लिख लो कि at this point P what is happening, from A to B, मैं यहाँ पे छोटा सा एक वो कर रहा हूँ, from point A, this is let's say my point A to B, what happens to gravitational potential energy? It decreases. Potential increase हो रहा है ना, because maximum value of the potential is 0. So Yeah. this is the lower potential. So potential increases so that gravitational potential energy increases. And what about kinetic energy? That is decreases ना? Yes. Are you agreed? अपन यहाँ पे ये टेक्निकल पॉइंट है, ये आपको समझ आया? जी से Yes. समझ में आया. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है ना, एंड go back to point P to, let's say this is your point P. So what is happening from P to B? From P back to B, gravitation is decreasing. ठीक है, dPe is decreasing and kinetic energy is increasing again. ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये कि overall when the body will be moving from this point to this point, it would have no loss no gain position. Yeah. Okay. Got it? So can you say it Because again? it is So how coming back to from A to B, how does the potential increase? How does GP increase? It becomes more negative though. हाँ, तो देखो जीपी डिक्रीज हो रहा है ना एक्चुअली. हाँ, Here, decrease हो रहा. हाँ, A to B. yes, A to P. Okay, A to P. A to P ग्रेविटेशन पोटेंशियल आपका बढ़ रहा So है. what is P? P is here, here, Uh-huh. here is P. Okay. ठीक है ना? Is it clear to all? Yeah.
तो इसका Yes, sir. मतलब ये हुआ कि फॉर दिस कैलकुलेशन व्हाट डू वी नीड, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी that one. If we are able to shift this rock from point A to P, it will automatically be in the potential well of which one, of the star B या planet B. तो हमें ये देखना है कि मिनिमम, उसने बोला मिनिमम आपको कितनी एनर्जी चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी मुझे इतनी चाहिए जितना इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रेविटेशन पोटेंशियल में वेरी करवाया। तो अगर ये यहाँ पहुंच जाता है एट दिस पोजिशन, दिस रॉक इज रीचिंग टू दैट पॉइंट, then it would automatically be trapped by your star B. ठीक है? Yes. So we will calculate something here, that again change in phi into m, that is equals to change in kinetic energy where it is 180. and अब आप देखो, अब आपके पास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ phi at p minus phi at a, that is equals to 1 by 2 mv square. That is the change what we need. और Yeah. आपके पास यहाँ पे it will be 180. Phi at p is, from the graph I have to find this value, this one. It is 4.4 1 2 3 4 5 20, हाँ, it is 4.4 नेगेटिव साइन के साथ। दिस वैल्यू इज 4.4 into 10 raised power 8। ठीक है? Yes. तो अब आप देखो, इट इज -4.4 into 10 raised power 8 minus potential at A is -10 into 10 raised power 4। ठीक है? दिस वे इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। सो रॉक की मैस, बल्कि आप एक और काम करिए, इट इज क्वाइट कन्वीनियंट इफ यू प्लग इन 1/2 mv² here, and this m will be cancel out. Just don't use 180 directly, just use m here, and it's your choice. अगर आप यहाँ काटना चाह रहे हो, ऊपर काटना चाह रहे हो, इट्स फाइन, नो इशू। ठीक है? just calculate v² is equals to Square root 2 of times 2 times delta that. phi। That's it। ये आपका v का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, that is 2 times delta phi square root। just calculations करिए, 2 into, it is 10 minus 4.4 कर लीजिए। 10 minus 4.4 is how much? 6 point, sorry, 5.6। करिए जरा। सर ये escape velocity का फॉर्मूला तो नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी? सॉरी, दोबारा बोलें। escape velocity का फॉर्मूला था ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हाँ, मल्टीप्लाई बाय ऑर्बिटल ये वेलोसिटी। बेसिकली हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला था। अच्छा, तो एक्चुअली सरफेस ए की यानी स्टार ए की जो ग्रेविटी है, उसको ये एस्केप करेगा, तो तब जाके स्टार बी की ग्रेविटी इसको पुल करेगी ना। अच्छा, सही। इसलिए तो यहाँ पे मतलब आप यूं ये समझ लें। ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह हटाकर हमने फाइ लगा दिया। हाँ, एक्चुअली सही। ये टेक्निकल प्रॉब्लम था इसमें। तो हमें एक्चुअली वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए जो इसको यहाँ से एस्केप करवाने के लिए रिक्वायर्ड है। बात समझ गए? क्लियर हो गया सबको? जी सर। ये क्या आंसर आ रहा है यस। इसका जी? 2.5.6 एक्सपोनेंट, 33.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हाँ जी, 33.5 into 10⁻³ तो हम इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें अगर, तो वी विल गेट 3.3, तो इसको 3.4 भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर आपकी राउंडिंग ऑफ प्रॉपर है तो 3.4 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ठीक है?
Yes. ठीक, ये क्लियर हो गया सबको? ये एक टेक्निकल क्वेश्चन था बेसिकली, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था हमें। फिर हमारे पास इसी के साथ में दूसरा जो मैंने टॉपिक लगाया ना, दैट इज योर बाइनरी स्टार्स। ठीक है, आगे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा इनको रीअरेंज करना है, लेकिन हियर आर दोस। बाइनरी स्टार, बाइनरी स्टार बेसिकली आपके पास क्या होता है? दैट इज the system of two stars which revolves around a common point with a same angular speed. यहाँ पे आप देख भी सकते हो, they are separated by a distance of 2.8 into 10 raised power 8 kilometers. This is the r, and d is the distance between point p and your star a center, and this is your star b. दोनों का ओमेगा वो है, angular velocity ओमेगा है. The stars are in circular orbit with the center of both orbits at point p at the distance d from the center of the star A. Explain why the centripetal force acting on the stars have the same magnitude. Exact इसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया था. So The the stars, centripetal force is is due to the gravitational force, yes, and they have the same gravitational force as they have the product of their masses the same, and they have the same separation. exactly, yes. अफान आपको भी क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक है, आपने ये लिखना है कि एफ सी इज जनरेटेड बाय एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स. आप ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो, विच इज same for both stars, which is same for both stars. Hence, FC of both is same. FC of both is equal, not same actually. ठीक है, same भी लिख सकते हो because he has mentioned this word same वाला. Equal in magnitude भी लिख सकते हो आप. ठीक है बच्चों, is it clear to you? Yes. अच्छा, फिर आप देखो उसने बोला है the time period of the orbit of the star is 4 years. Calculate the angular speed. So आपको मैंने बोला था कि angular speed की calculation के लिए you just need a single information, that is its time period. Just put the values and get the answer. Time period 4 years है. आप इसको convert करेंगे, 4 years 365 days होते हैं, and in Times one day 60 there times. are 86,400 seconds are there. ये सारा calculations करिए जरा. So how is it 86,400? I think it's less than that. I think 60 बस times 60. हाँ, नहीं 60 times 24 Okay, yeah, one day. sorry. Yeah. 4.98 multiplied by 10 to the power minus 8. 4.98 into 10 की पावर कितना हो गया? Minus 8. minus 8. So your answer will be in two significant figures, 5.0 into 10 raised power minus 8 radians per second. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? Yes. ओके, उसके बाद आपके पास ये आता है, कह रहे कि the separation of the centers of centers of the stars is 2.8 into 10 raised power कितनी है? 10 raised power 8 kilometer. The mass of star A is MA and mass of star B is MB. ठीक है, the ratio is given to you. Determine the distance. मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास रेशियो का क्वेश्चन गिवन हो, या रेशियो मांगे या डिस्टेंस मांगे, तो you have very easy trick, no calculations at all. Just put FC of A equals to FC of B. ऐसे ही था ना? तो इससे FC of A किसके बराबर हो जाएगा? Mass of A into R of A into omega, and that was equals to mass of B into R of B into omega. Omega will be cut. ठीक है, अब आपके पास एम ए डिवाइडेड बाय एम बी साइड पे कर दो,
you will get the ratio separately MA divided by MB, and that will be equals to radius of B divided by radius of A. अब आप लोगों को डायग्राम पे जाना है वापस. So what is radius A? Radius A का मतलब है this D, this is your RA, and what is this? This is your radius B, and that is R minus D. ठीक है जी? This is your radius of star, I mean centimeter, रेडियस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बी. तो यहाँ पे आपके पास एम ए अपॉन एम बी दैट विल बी इक्वल्स टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय डी. ये हो जाएगा. देखो एम ए और एम बी का आंसर क्या है? 3 है. 3. ठीक है. आर इज 2.8. बल्कि आप इसको अभी भी ना वैल्यूज पुट करो, जस्ट सिंप्लीफाई दैट वन. आर माइनस डी डिवाइडेड बाय डी. तो इसको मैं 3D कर लेता हूँ और इस डी को उठा के इधर लेके आ 4D. जाता हूँ. तो इट वुड बिकम 4D इज इक्वल्स टू आर, और डी विल बी इक्वल्स टू आर बाय 4. आर आपका कितना था? आर वाज 2.8 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर. तो आंसर क्योंकि किलोमीटर में है तो हमें मीटर में जाने की जरूरत नहीं है. डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.7. 0.28 का किया तो 0.7 into 10 raised power 8 kilometers, and your answer will be 7.0 into 10 raised power 7 kilometers. ठीक है जी? Yes. सही है सर. उसके बाद आपको देखो वही सारी इंफॉर्मेशन नोट्स वाली आपको हेल्प आउट कर रही है. दैट इज यहाँ पे उसने कैलकुलेट करने का मांगा है क्या? यू हैव टू कैलकुलेट mass of B. मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि when you are supposed to calculate separate mass, individual mass, तो आपने FC को FG के बराबर पुट करना है. फिर मैंने ट्रिक नंबर 2 बताई थी कि अगर आपने B का मैस निकालना है तो FC ऑफ A को FG के बराबर पुट करना पड़ेगा. ठीक है. तो FC ऑफ A विल बी इक्वल्स टू FG. जब आप करेंगे तो FC ऑफ A मैंने आपको बोला mass of A into D into ओमेगा स्क्वायर. MR ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने सिंपल. ठीक है. बात समझ आ रही है? जी सर. इज इक्वल्स टू G mass of A mass of B. मैं M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ. सो जस्ट गॉट दिस नंबर MA एंड MA विल बी कैंसल्ड आउट. अब आपको समझ आ गया मैंने एम ए को क्यों रखा था? बिकॉज ऑन द अदर साइड एम ए में कैंसिल हो जाना चाहिए. एंड नाउ यू गॉट mass of B that is equals to R square T into ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. R की वैल्यू आपके पास है जी 2.8 into 10 raised power. सर सॉरी टू Because इंटरप्ट, मुझे सर बाहर जाना है तो मैं यहाँ तक क्लास ले लेता हूँ. बस आपको समझ आ गई यहाँ से आगे कैसे जी मैनेज जी करना सर, हमने? बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल सही हो गया. और आपके कौन से ठीक है. क्वेश्चन थे? इसके अलावा और भी थे? सर थे बस, मेरे ख्याल में एक ही दो हैं. 5 मिनट लेंगे हम, नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे पहले. बिल्कुल ठीक हो गया. नो इश्यू सही एट है ना? ऑल. ठीक है सर. ठीक है. थैंक यू सर. बस मैं भी वाइंड अप कर रहा हूँ. मेरी भी आगे क्लास है. ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद इंशाल्लाह. जी सर. ठीक है. सर हाँ. ओके मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज. अच्छा, तो ये 10 की पावर 8 को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो आई विल गेट, बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी. तो इट बिकम्स 10 पावर 11 इंटू डी की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाली. दैट वाज 0.7 इंटू 10 रेज पावर 11. मैं इसको सबको 11 की फॉर्मेट में लिख रहा, नहीं सॉरी, ये कितना हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, मीटर्स में कन्वर्ट हो गया. इनटू योर आंसर वाज 4.98. here you will write calculated answer, not the answer represented as an answer. ठीक है. into 10 raised power minus 3 था. what was omega? it was minus 8. sorry, it was minus 8. और इसका भी स्क्वायर है. ये जल्दी से करिए सर, क्या आंसर आएगा ना? तो मेरे कैलकुलेटर नहीं है लेकिन या आई अंडरस्टैंड दिस. यू गॉट इट? या तो मैं सब भी आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना. ठीक हो गया जी? होती. ओके. बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा. ये मैं आपको भेज देता हूँ, और बाकी जो चीजें हैं वो फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है.
सही है, ओके। ठीक है, आपने काम करना है और जहाँ मसला है मुझे बताना है। See you then. अल्लाह P3 वाला मुझे भेज देना याद से। ओके। ठीक है।